Good morning, Namaskar. My name is Acharya Alok and I am from Acharya IAS Institute. And today we will discuss the current affairs in English medium. तो इंग्लिश माध्यम में हम आज करंट अफेयर डिस्कस करेंगे ताकि जो ऐसे छात्र हैं जो इंग्लिश मीडियम से हैं उन्हें भी भरपूर इसका फ़ायदा मिल सके। और जैसा कि हम आपको बता चुके हैं, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट on daily basis we discuss an article which is very important in terms of current affairs. So the today's news article is agreement on fisheries subsidies. As we all know that fishery fisheries industry is very important industry in coastal areas. The states who has coastal like Gujarat, Odisha, West Bengal, they are very rich in coastal line. So the fishery production is very high in these areas. So without any further book लेके आओ मैं without any delay क्यों नहीं लेके आए हो गो एंड टेक द बुक जल्दी जाओ लेके आओ बुक बिना बुक के कैसे पढ़ लोगे आप कल भी मैंने बोला था कल भी नहीं लाए थे आप इज इट अ गुड वे ऐसे पढ़ लोगे आप जाओ जल्दी फटाफट भाग के जाओ सो एग्रीमेंट ऑन फिशरी सब्सिडीज for prelims, if we talk about the prelims perspective, then WTO, that is World Trade Organization, Ministerial Conference, India's fisheries sector, special and differential treatment. If we talk about the mains, then significance of India's fisheries sector, effects of policies of international groupings on India's interest and economies. Why news? Recently, agreement on fisheries subsidies (AFS), that is AFS, was concluded at the World Trade Organization ministerial meeting. What is the WTO ministerial conference? WTO, that is World Trade Organization, and if we talk about the WTO ministerial conference, then it came into being in 1995. The WTO is the successor of the General Agreement on Tariffs and Trade, that is GATT, established in the wake of the Second World War. Its objective is to help trade flow smoothly, freely, and predictably. It has 164 members. So, from the perspective of prelims, the direct question could be describe pick the correct statement और उसमें you would get four options like it came into being in 1995, the full form of or we can say the WTO is the successor of General Agreement on Tariffs and Trade, that is GATT. तो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं एंड इफ वी टॉक अबाउट द मेंबर्स, सो हाउ मेनी मेंबर्स इन GATT? So, sorry, how many members are WTO Ministerial Conference? Yeah, WTO. So, if we talk about the WTO membership, so 164, 164 members जो थे वो WTO के पास। Now, what is WTO Ministerial Conference? It is the WTO's top decision-making body and usually meets every 2 years. After 2 years, the summit happens. So, if we talk about the time duration, how in what is the interval, time interval in which this meeting happens. So we will say after every 2 years it happens. All members of WTO are involved in the MC, and that is a ministerial conference, and they can take decisions on all matters covered under any multilateral trade agreement. What is multilateral trade agreement? The agreement which is happened in multiple countries, that is multilateral trade agreement. What do we know about the agreement? So now we will talk about the agreement.
के बारे में क्या है वो जानते हैं। इट विल प्रोहिबिट सब्सिडाइज subsidies from being provided for illegal, unreported, and unregulated fishing and overfished stocks. So, if any country is providing the subsidies to anyone, तो उस पे बैन लग जाएगा, that would be ban. The agreement also prohibits providing subsidies for fishing on high seas which are outside the jurisdiction of the coastal countries and regional fisheries management organization arrangements. If we talk about the transition period allowance, then under the special and differential treatment (SNDT), जिसे कहते हैं हम special differential treatment, developing countries and least developed countries (LDCs) have been allowed a transition period of 2 years from the date of entry into the force of this agreement. They will have no obligation to implement disciplines for the specific period. Exempted areas, कौन से ऐसे areas हैं जो exempted हैं, तो कौन से areas में छूट है. तो no prohibition has been imposed on a WTO member regarding granting or maintaining subsidy to its vessel or operator as long as it is not carrying out IUU. No prohibition on providing subsidies has been imposed for fishing regarding overfished stocks as long as such subsidies are implemented to rebuild the stock to biologically sustainable level. What are the benefits of this agreement, or we can see what are the benefit of a WTO ministerial conference. Let's talk about the benefits. It will eliminate the subsidies granted to fishing vessels or fishing operators engaged in IUU fishing. It will check large-scale IUU fishing, which deprives coastal countries like India of fisheries resources, thereby significantly significantly impacting the livelihood of our fishing communities. What is India's stand? हमारे भारत प्यारे भारत का इसमें क्या स्टैंड है, क्या इसमें रोल है. तो लेट्स टॉक अबाउट द रोल ऑफ इंडिया, or we can say let's talk about the stand of India. So India is one of the lowest fisheries subsidizers despite such a large population and one of the disciplined nations in sustainably harnessing the fisheries resources. हमें इंडिया को सबसे कम सब्सिडी मिलती है, जबकि जो जो ट्रुथ है दैट इज कि वी आर द लार्जेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड और डिसिप्लिन्ड नेशंस. एक हम भावना एक हमारी है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ भवेत् माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्. हमारी एक योजना रहती है कि हम पूरे इंडिया पूरे विश्व का भला चाहते हैं. हमने हमेशा ज्ञान बांटा है, हमने कभी हमें हमने हमेशा बुद्ध दिया है, हमने वर्ल्ड को हमने भारत पूरे विश्व को बुद्ध दिया है. वी डू नॉट टॉक अबाउट द बैटल, बट अगर हमें कोई छेड़ता है तो हम छोड़ते नहीं है. द पॉलिसी ऑफ इंडिया, इंडिया वीरों की कमी नहीं है. तो वही है कि हम इतने डिसिप्लिन होने के बावजूद भी डब्ल्यूटीओ से सबसे कम सब्सिडी वी गेट. Next, if we talk about the India does not exploit the resources indiscriminately like other advanced fishing nations, and India's fisheries sector primarily depends on several millions of small scale and traditional fisheries. ऐसा नहीं है. This is not the fact कि इंडिया बड़े बड़े मशीन नहीं लगा सकता है. इंडिया ऐसा गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट नहीं कर सकती जो बहुत बड़ी बड़ी मशीन लगा के फिशरी फिशरी मार्केट में करे. बट as a nation, India always take care of small जो मछुआरा होते हैं उनकी टेंशन उनकी चिंता करते हैं. इस वजह से हम कभी किसी को एक्सप्लॉइट नहीं करते. वी डू नॉट एक्सप्लॉइट द नेचुरल रिसोर्सेज. बट इफ वी टॉक अबाउट द बिग नेशंस लाइक यूएसए कनाडा, दे एक्सप्लॉइट द रिसोर्सेज. और यही है कि क्लाइमेट चेंज का इतना समस्या इतनी बड़ी आ रही है. बेटा ऐसा करो, ये आपका हो गया, गुणा पे चल रहे हैं आप, है ना. ये हो गया आपका. ये नो यहाँ से स्टार्ट करेंगे. क्या करना है देखिए, 25 4 5 432 है यहाँ पे. ये वाला ये रखा है तो 432 आ जाएगा. ठीक है, ऐसे करो ना. आ जाए
2000. So, therefore, those WTO members who have provided huge subsidies in the past and engaged in large-scale industrial fishing, which is responsible for the depletion of fish stocks, should take more obligation to provide subsidies based on the polluter pay principle, common but differential responsibility. Now we should know about what do we know about India's fishery sector. हमारा भारत जो देश है, हमारा प्यारा भारत जो देश है, उसमें इंडिया में जो फिशरी मार्केट है उसके बारे में लेट्स टॉक अबाउट द फिशरी मार्केट. Fishing is the capture of aquatic organisms in the marine, coastal and inland areas. इसका मतलब ये है दोस्तों कि कैप्चरिंग ऑफ एक्वाटिक जो हमारे फिशरी मार्केट में फिशरी मार्केट में जो मछलियाँ हैं वो समुंदर में या फिर इनलैंड एरियाज में इनको पकड़ना ये एक तरह से कह सकता है फिशरीज कहलाता है. मरीन एंड इनलैंड फिशरीज टुगेदर विद aquaculture provide food, nutrition and a source of income to millions of people around the world from harvesting, processing, marketing and distribution. If we talk about the Indian culture, if we talk about the Indian postal guideline, postal line, then the largest coastal line is in Gujarat. तो वहाँ पे बहुत अच्छा फिशरीज मार्केट है. देन वी मूव टू वेस्ट बंगाल, वहाँ पे बहुत अच्छा है. देन नीचे अगर आप मुंबई में अगर आप कहें तो वहाँ पे उड़ीसा, ये जो जितने भी कोस्टल एरियाज हैं वहाँ पे फिशरीज मार्केट बहुत अच्छा है और जिससे मिलियंस लाखों करोड़ों लोगों को रोजगार मिलता है. मछुआरे हैं. गुजरात में आप जाएंगे, गुजरात में देखेंगे गुजरात में कितना बड़ा मार्केट है फिशरीज का. वेस्ट बंगाल में फिशरीज, वहाँ का तो फूड है एक तरह से, बिना विदाउट विदाउट फिश वहाँ पे कोई भी खाना नहीं खाया जाता है. तो ये एक एक बहुत बड़ा सेक्टर है. For many, it also forms part of their traditional cultural identity. As I told you कि ये हमारा ऐसा नहीं कि सिर्फ हम धंधे के लिए करते हैं. अगर हम यूएसए, कनाडा, चाइना और इनकी बात करें, जापान की बात करें तो दे डू दिस बिकॉज ऑफ ऑक्यूपेशन, बिकॉज ऑफ क्या कहते हैं कि इनकम. बट वी डू इट फॉर द कल्चरल प्रिजर्वेशन. हम अपना कल्चर जो हमारा सभ्यता है उस सभ्यता को आगे बढ़ाने के लिए भी हम ऐसी ये इस सेक्टर में. One of the greatest threats to the sustainability of global fishery resource is illegal, unreported and unregulated fishing. देखिए हर जगह करप्ट लोग हर जगह हैं. Corrupted are everywhere. If we talk about the USA, Canada, Russia, Finland, Switzerland, जितने भी ऐसे इनलैंड, जापान, सुमात्रा, मालदीव, हर जगह करप्शन है. लेकिन जो हमें सबसे ज्यादा खतरनाक जो चीज है वो इलीगल, जिसका मतलब कोई रजिस्टर्ड नहीं है, अनरिपोर्टेड जो कभी रिपोर्टेड नहीं है कितनी मछलियां पकड़ गई, एंड अनरेगुलेटेड जिसका कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है, जो गवर्नमेंट के अंदर नहीं आता, वो बस सबसे खतरनाक है. Let's talk about the Indian scenario. और Indian scenario में क्या है कि India is the second largest fish producing country in the world, accounting for the 7.56% of global production and contributing about 1.24% of the country's gross value added, that is GVA. जो जिसका जो हमारी जीडीपी होते हैं उसमें कैलकुलेशन में हमें ग्रॉस वैल्यू एडेड में मदद करता है. एंड ओवर 7.28% of the agricultural GDP. Fisheries and aquaculture continue to be an important source of food, nutrition, income, and livelihood to millions of people. As I told you, my dear friends, as I told you, fisheries are not only the source of income, it is also the source of food, nutrition, income and livelihood to millions of people. इंडिया में तो करोड़ों लाखों लोगों का जो मछुआरे हैं, उड़ीसा की बात करें, अगर हम गुजरात की बात करें तो लाखों करोड़ों लोगों का घर चलता है. India aims to achieve a target of producing 22 million metric tons of fish by 2024-25. Very important question. ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है भाई 2024-2025 में इंडिया का टारगेट क्या है. इंडिया का टारगेट क्या है फिश उत्पादन में, फिशरीज में. तो हम कहेंगे कि 22 मिलियन मीट्रिक टन जो फिशरीज का उत्पादन इंडिया करना चाहता है 2024-2025 में. मतलब अभी 2022 चलिए 2 3 साल में करना चाहता है. The fishery sector has witnessed three major transformation in the last few years. As the Indian government doing great for the all the people, all the sectors.
some are problems, but let's talk about the positive sides. So the growth of inland aquaculture, especially freshwater aquaculture, the mechanization of captive fisheries, the successful commencement of brackish water shrimp aquaculture, related government initiative. अब देखिए, लेट्स टॉक अबाउट द गवर्नमेंट इनिशिएटिव कि भारत सरकार ने इसमें कौन कौन से इनिशिएटिव लिए हैं. तो फिशिंग हार्बर्स, द डेवलपमेंट ऑफ 5 मेजर फिशिंग हार्बर्स दैट आर कोची, जिसे कोचीन कहते हैं, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप एंड पेटुघाट एज हब्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज. सीवीड पार्क, सीवीड पार्क भी बनाए गए हैं जिसमें मल्टीपर्पज सीवीड पार्क इन तमिलनाडु. तो डायरेक्ट क्वेश्चन कैन बी fetched from this information, that is what is where is the multi-purpose seaweed park, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका और उड़ीसा. तो आप कहोगे that is the correct answer is तमिलनाडु. As I told you, this session is very important. All the exams mainly for UPSC, but the one day exam, जितने भी वन डे एग्जाम है आप मेरी वीडियो देखिए और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपका एक भी करंट अफेयर का क्वेश्चन गलत नहीं होगा इसमें से. बहुत मस्ती के साथ, बहुत मजे के साथ और पूरी तन्मयता के साथ हम पढ़ते हैं. If we talk about the प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, देखिए अब प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बारे में आप जान लीजिए. इट strives to create direct employment to 15 lakh fishers, fish farmers, it and about size this number as indirect employment opportunity. मतलब 15 लाख लोगों को, जो मछुआरे फिशर्स हैं, उनको डायरेक्टली एक एम्प्लॉयमेंट दिया गया और 15 की 45 45 लाख जो ऐसे लोग हैं जिन्हें इनडायरेक्टली भारत सरकार अपॉर्चुनिटी देती है एम्प्लॉयमेंट की. इट ऑल्सो एम्स टू डबल द इनकम ऑफ फिशर्स, फिश फार्मर्स एंड फिश वर्कर्स बाय 2024. और जितनी इनकम इन्हें पहले मिल रही है उससे डबल इनकम इंडियन गवर्नमेंट कोशिश कर रही है 2024 में हमारे जो फिशर्स हैं, मछुआरे हैं, फिश जो किसान हैं और वर्कर्स हैं, उनकी जो इनकम है वो डबल हो जाए. पार्क वे स्कीम. अब पार्क वे स्कीम क्या है? द स्कीम डाइवर्सिफिकेशन ऑफ ट्रॉल फिशिंग boats from park straits into deep sea fishing boats was launched in 2017 as a centrally sponsored scheme. Let's talk about the centrally. Let's talk about the centrally. Let's talk about the centrally. अरे यार एक मिनट, मजा आ रहा. Let's talk about the centrally sponsored scheme. That means कि all the income, all the subsidies would be given to the fishers by the central government. No money, no subsidies would be given by state government. सारा जो पैसा है वो भारत सरकार से आएगा, केंद्र से आएगा, न कि राज्य से आएगा. तो ये स्कीम जो है पार्क वे स्कीम, वो केंद्र की स्कीम है. डाइवर्सिफिकेशन ऑफ ट्रॉल फिशिंग बोट्स फ्रॉम पार्क स्टेट्स into deep sea fishing boats was launched in 2017. 2017 में इसकी शुरुआत की गई थी. It was launched as a part of umbrella Blue Revolution scheme. और इसका जो पार्ट था, that is Blue Revolution scheme. Blue Revolution scheme का ये पार्ट. Next, मरीन फिशरीज बिल 2021. एक बिल लॉन्च हुआ है 2021 में. वो क्या बिल है? द बिल प्रोसेस टू only grant license to vessels registered under the Merchant Shipping Act 1958 to fish in the exclusive economic zone. मतलब एक लाइसेंस दिया जाएगा उनको जो पहले से रजिस्टर्ड है अंडर द एक्ट मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1958. So the direct question could be fetched that Merchant Shipping Act came into being in the year 1958, 97, 1957, 1956, 1954. तो आप बताएंगे 1958. If we talk about the questions of previous year, तो UPSC Civil Service Examination previous year question. तो question था preliminary the term agreement on agriculture, agreement of the application of sanitary and phytosanitary measures and peace clause appear in the news frequently in the context of the affairs of the. मतलब ये किससे संबंधित है? ये जो टर्म्स हैं वो किससे संबंधित है? तो ये 2015 का प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, प्राथमिक परीक्षा का क्वेश्चन है. फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज,
वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। तो आप जानते हैं कि जैसे हमने डिस्कस किया था डब्ल्यूटीओ के बारे में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जो कि 1995 में आया था। ठीक है, डब्ल्यूटीओ, तो डब्ल्यूटीओ इसका सही आंसर आ जाएगा। तो अगर ये आप सही करते तो आपको एक नंबर, इसमें 2 नंबर आपको मिल गया। द टर्म्स एग्रीमेंट ऑन कल्चर, एग्रीमेंट ऑन एप्लीकेशन ऑफ सैनिटरी एंड phytosanitary measures and peace clause are associated with the World Trade Organization. The WTA agreement on agriculture AOA provides the framework for the long-term reform of the agriculture trade and the domestic policies with the aim of leading of fairer competition and the less direct distorted cycle. The WTO's agreement on the application of sanitary and phytosanitary measures SPS agreement aims to provide the balance between the right of government to protect food safety, plant and animal health, and prevent the sanitary and phytosanitary measures from being unjust trade barriers. A peace clause holds the domestic support measures and export subsidies to WTO members which are legal under the provisions of the agreement on agriculture cannot be challenged by other WTO members on ground of being illegal under the provision of another WTO agreement. Therefore, option C, that is WTO, is correct. मेंस में क्वेश्चन आ गया भाई 2018 में। देखिए कितना अच्छा हमारा सिस्टम बन गया है कि हम एक टॉपिक डिस्कस करते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, करंट न्यूज से रिलेटेड होता है, साथ ही साथ उसका पिछले वर्षों में कौन से में आया, कब आया, और मेंस का भी हम बताते हैं कि भाई मेंस का क्या है इसमें रोल। कि मेंस का कौन सा क्वेश्चन था, तो मेंस का क्वेश्चन था व्हाट आर द की एरिया ऑफ रिफॉर्म इन द डब्ल्यू हैज टू सर्वाइव in the present context of trade war, especially keeping in mind the interest of India। देखिए ये जो मैंने आज डिस्कस किया उस चीज को ही आप हूबहू अगर अपने आंसर में ले जाएंगे, डब्ल्यूटी के बारे में सबसे पहले लिख देंगे, देन इंटरेस्ट ऑफ इंडिया क्या है, इंडिया में मरीन फिशरीज के लिए क्या क्या योजना है, ये आप 250 वर्ड में लिख देंगे, आपको सामने नंबर। और इसका सोर्स है PIB, दैट इज प्रेस इंफॉर्मेशन। तो आज के लिए दोस्तों यही है। आपसे गुजारिश करूंगा अगर आपके आसपास जो भी मित्र में मुझे देख रहे हैं, आप मुझे 30 मिनट पर जाकर सब्सक्राइब कर लें। 30 मिनट पे जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल है आचार्य IAS का, वहाँ पे आपको इसका लाइव प्रसारण रोजाना मिलेगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, वनडे एग्जाम की, या फिर IAS PCS UPSC का कोई भी एग्जाम आपको CDS निकालना है, करंट अफेयर सेक्शन में आप जरूर मुझसे रोजाना जुड़िए। एक टॉपिक को हम बहुत ही शानदार तरीके से करते हैं और अपने अपने आसपास लोगों को प्रेरित कीजिए। खासकर गांव में ये क्रांति लाना चाहता हूँ कि गांव का हर बच्चा चाहे कि भैया मुझे IAS PCS बनना है, मतलब IAS PCS बने ना बने, एक तैयारी करनी है, सो दैट कि एक समझ आपके अंदर विकसित हो। और यही मेरा प्रयास है और यही इस लाइव सेशन का उद्देश्य है कि मैं ये चाहता हूँ कि जितना भी देखिए शहर में या फिर जो गवर्नमेंट जॉब ऑलरेडी कर रहे हैं, दे आर हाई क्लास के जो लोग हैं वो पहले से ही अपने बहुत लोग जागरूक हैं। दे आर डूइंग व्हाट दे वांट टू डू, दैट मीन्स कि दे आर दे आर टेकिंग देयर चिल्ड्रन टू द स्कूल्स which provide all the information regarding NDA, Lekpal, PAT, SSC, UPSC, for all the engineering needs. But I want to focus on those primary schools, वो जो सुदूर क्षेत्र में एक प्राइमरी स्कूल है जिसके जिसके पास जो टीचर है वो भी ढंग से नहीं पढ़ाते हैं। मैं चाहता हूँ कि वहाँ पे जाऊँ और वही मेरा प्रयास है। पिछले 4 साल से तो प्रयास में लगा हुआ हूँ और आप लोगों का सहयोग रहेगा तो अगले 5 साल के अंदर 10 IAS में एटा से निकाल दूंगा। लेकिन उसके लिए आपको मुझ पर विश्वास करना पड़ेगा, मेरा साथ देना होगा, मुझे सहयोग देना पड़ेगा और बच्चों को आपको प्रेरित करना पड़ेगा। वंस आवर चिल्ड्रन हैज बीन इंस्पायर्ड बाय मी और बाय अदर्स बाय बुक्स, किसी भी तरीके से इंस्पायर्ड हो गए एंड दे मूव इन राइट डायरेक्शन, देखिए उसके बाद कमाल का होता है। तो आज के लिए ज़्यादा ना करते हुए बाद में किसी दिन मैं लाइव जब आता हूँ तब आपसे बात करूँगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद। लेखपाल के लिए मैं आप आज से ये कोशिश करूँगा कि शाम को और सुबह को 1-1 घंटे मैं लाइव आऊँ और करंट अफेयर का सेक्शन जितना भी लेखपाल से रिलेटेड है, जितने बच्चे पैट का एग्जाम देंगे या लेखपाल का देंगे या PGT का देंगे, वो मुझसे जरूर जुड़े। मेरे चैनल का नाम आचार्य IAS है, जो कि आप देख रहे हो। अगर आप YouTube पे देख रहे हो, अगर फेसबुक पे देख रहे हो तो आप 30 मिनट का ऐप डाउनलोड करके
वहाँ पे आलोक कुमार सर्च कीजिए, आलोक कुमार सर्च कीजिए करके मुझे रिक्वेस्ट भेजिए, उसमें जो भी आपको थोड़ा हल्का फुल्का चार्ज मेरा मेंटेनेंस का, मेरे खाना खर्चा निकल आए इतना ही चार्ज करूँगा। उसके बाद आपको एक अच्छी इन्फॉर्मेशन एक रिड्यूस्ड मैनर में एक कैसे तैयारी करते हैं, कैसे क्या करते हैं, इसकी सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय वंती, जय लोक।